जाएंगे, उनका नाम लेंगे ना, स्टेज पे नहीं बैठेंगे तो काट दो ना फिर। काट दो, ठीक है। शुरू हो गया। एक बार इसको प्रोनाउंस कर दो।
हेलो 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 हेलो। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार का आगमन हो चुका है और सभी माननीय सम्मानित अतिथिगण पधार चुके हैं हमारे समारोह स्थल पर। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में स्टूडेंट अमिता, हमारे बीच में मैं स्टूडेंट को आमंत्रित करती हूं कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय टोलिका सिंह को इनवाइट कर रही हूं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सादर मंच पर सम्मान आसन ग्रहण करवाएं। टोलिका सिंह। टोलिका सिंह को इनवाइट करती हूं कि आप समारोह के माननीय जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ईशिता सिंह से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियामत रांची श्री श्याम एच अर्जुन वदकर सर को ससम्मान मंच पर आसन ग्रहण करवाएं। निकिता डे को इनवाइट करती हूं कि आप हमारे ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर फाउंडर HCL एंड फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियामत रांची श्री अजय चौधरी सर को मंच पर ससम्मान आसन ग्रहण करवाएं। सौम्या श्री को आमंत्रित करती हूं कि आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश जी को ससम्मान मंच पर आसन ग्रहण करवाएं। और तालियां लगातार जोरों की बजती रहनी चाहिए। और अंजलि कुमारी को इनवाइट करती हूं कि आप ऑनरेबल लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली झारखंड श्री नवीन जायसवाल जी को मंच पर आसन ग्रहण करवाएं। और मैं अर्शी नरीन को इनवाइट करती हूँ कि हमारे बीच में है ऑनरेबल मेयर रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची झारखंड मैम आशा लकड़ा जी को मंच पर ससम्मान आसन ग्रहण करवाएं। प्रगति कुमारी को इनवाइट करती हूँ कि आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CCL श्री PM प्रसाद सर को मंच पर आसन ग्रहण करवाएं। अपराजिता सिंह को इनवाइट करती हूं कि आप गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर IIT गुवाहाटी डॉक्टर उदय शंकर दीक्षित सर को मंच पर आसन ग्रहण करवाएं। एक बार बेहद जोरों की तालियों से सम्मान करें, अपना स्वागत उन तक पहुंचाएं। जोरदार तालियों के साथ हमारे चीफ गेस्ट, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का आज के उद्घाटन समारोह में मैं फिर से जोहार नमस्कार करती हूं आप सभी मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी विशिष्ट अतिथि महोदय का आप सभी का अभिनंदन करती हूं। और यहां उपस्थित आप सभी का इंजीनियर्स डे पर नियामत रांची और फ्यूचरिस्टिक एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फोरम ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वर्कशॉप के उद्घाटन समारोह में, जिसका विषय है रेमैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग। और हम सभी जान रहे हैं कि आज इस अवसर पर यह आयोजन हुआ है, उसका सबको कारण पता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं हम सभी। और आज हम सब उत्साह से भरे हुए, क्योंकि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच में उपस्थिति है। आप देख रहे हैं हमारे बीच में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय पधार चुके हैं, मंच पर आसीन हैं और सभी अतिथिगण। तो मैं इनवाइट करती हूँ, जब हमारी भारतवर्ष की परंपरा रही है कि जब अतिथिगण हम सबके घर आंगन पधारते हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं अपने अपने तरीकों से, लेकिन सबसे सशक्त माध्यम पुष्प। तो पुष्प गुच्छ प्रदान कर इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ टोलिका सिंह को कि आप मंच पर आएं और हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सुभाष सरकार सर का अभिनंदन करें, स्वागत करें पुष्पगुच्छ प्रदान कर। इशिता सिंह को इनवाइट करती हूं कि आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियामत रांची श्री श्याम एच अर्जुन वधकर का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर। और तालियां तो लगातार बजती ही रहनी चाहिए। बहुत बड़ा अवसर है जब हमारे माननीय अतिथिगण हम सबके बीच में हैं। मैं इनवाइट करती हूँ स्टूडेंट निकिता डे को कि आप मंच पर आएं और स्वागत सम्मान करें। ऑनरेबल फाउंडर एससीएल एंड फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियामत रांची श्री अजय चौधरी सर का गेस्ट ऑफ ऑनर। सर सौम्यश्री को आमंत्रित करती हूं कि आप हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर। और आमंत्रित करती हूँ अर्शी नरीन को कि आप ऑनरेबल मेयर रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची झारखंड मैम आशा लकड़ा जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर। अर्शी नरीन। प्रगति कुमारी को आमंत्रित करती हूं कि आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सीसीएल श्री पीएम प्रसाद सर का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर। अपराजिता सिंह को इनवाइट करती हूं कि आप स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे बीच में रेस्पेक्टेड प्रोफेसर आईआईटी गुवाहाटी डॉक्टर उदय शंकर दीक्षित सर का। और जब स्वागत की घड़ी चल रही है, हम सभी अपने अपने अभिनंदन और स्वागत को संप्रेषित कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं स्वागत गीत हेतु आमंत्रित करती हूं हमारे बीच में स्टूडेंट्स रिया मंडल, आयुषी प्रिया, स्नेहा कुमारी और दिशा आनंद को स्वागत गीत की प्रस्तुति हेतु। इस सुरमई मधुमई बेला में हे देव तुम्हारा अभिनंदन। इस सुरमई मधुमई बेला में हे देव तुम्हारा अभिनंदन। इस सुरमई मधुमई बेला में आए हैं जो द्वार हमारे, है वो सारे महिमावान। तन मन का अनुराग लिए हम करते हैं ये स्वागत गान। आए हैं जो द्वार हमारे, है वो सारे महिमावान। तन मन का अनुराग लिए हम करते हैं ये स्वागत गान। चरण पड़े तेरे जहाँ जहाँ वो धूल भी लगती है चंदन। इस सुरमई मधुमई बेला में हे देव तुम्हारा अभिनंदन। इस सुरमई मधुमई बेला में हे देव तुम्हारा अभिनंदन। इस सुरमई मधुमई बेला में। थैंक यू। ये भारत भूमि है, यहाँ पर अतिथिगणों को हम देवतुल्य मानते हैं। तो फिर से अभिनंदन हमारे देवतुल्य माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का। और कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जब हम करते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, प्रांगण हो, आंगन हो या फिर कोई भी समारोह हो, और आज का समारोह बहुत महत्वपूर्ण। तो ऐसे में मैं अपने आदरणीय माननीय मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी विशिष्ट अतिथि महोदय को सादर निवेदन करती हूं कि दीप प्रज्वलित कर अपने कर कमलों से आज के समारोह का विधिवत शुभारंभ करने का सादर अनुरोध। माननीय मुख्य अतिथि महोदय।
दीपक पवित्रता, शुचिता और स्वच्छता का प्रतीक है। दीप ज्योति हम में प्रसन्नता, हर्ष, उमंग और विश्वास के भाव भरती है। दीपक मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, मार्ग को प्रशस्त करता है। लौ में निरंतरता ही जीवन प्रवाह का मूल मंत्र है। सतत प्रवाह जीवन की प्राण धारा है। दीपक श्रम का प्रतीक है। दीप की रोशनी हमारे मन और घर के अंधेरे को दूर कर, रोशन कर हम में नई आशा का संचार करता है। ईश्वर की आराधना हम ज्योत जलाकर करते हैं और आज ऐसा ही कर रहे हैं। आज के उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदयगण इस आशा विश्वास के साथ कि आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी, शुद्ध प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। और इस तरह से विधिवत शुभारंभ हुआ दीप प्रज्वलित कर हमारे आज के समारोह का। और अब मैं माननीय मंचासीन अतिथिगणों के विधिवत स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूं डायरेक्टर नियाम्ट पार्था प्रोतीम चट्टोपाध्याय सर को। सर। नमस्कार, सुप्रभात, जोहर। On behalf of National Institute of Advanced Manufacturing Technology, Ranchi, and Futuristic and Advanced Manufacturing Forum of India, I would like to convey my heartfelt welcome to our Honorable Union Minister of State for Education, Dr. Subhash Sarkar ji. I extend my hearty welcome to our Honorable Chairman, Sri Shyam H. Arjun Vatkar ji. I convey my hearty welcome to Sri Deepak Prakash ji, Member of Parliament, Rajya Sabha, Sri Naveen Jaiswal ji, Member of Legislative Assembly, Jharkhand, Srimati Asha Lakra ji, Mayor, Ranchi Municipality Corporation. I extend my most sincere welcome to Sri Ajay Chaudhary, Founder ICL and former Chairman of National Institute of Advanced Manufacturing Technology. I extend my cordial welcome to Sri PM Prasad ji, Chairman cum Managing Director, Central Coalfield Limited. I extend my welcome to Professor U.S. Dikshit, Professor, Department of Mechanical Engineering, IIT Madras. Sir, we are thankful to you for finding your time to be with us in this August ceremony. Particularly, I am thankful to Dr. Subhash Sarkar for taking the trouble of the tedious journey by road from Bankura to Ranchi. Many of us have the experience. Thank you very much, sir, and we look forward to your blessing and support. Thank you. Namaskar. धन्यवाद सर। आज के समारोह में आज का जो ये उद्घाटन समारोह है, Inaugural Ceremony of the International Workshop on Remanufacturing Capacity Building, और इस पर विस्तार के लिए, विषय प्रवेश के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ रिस्पेक्टेड डॉक्टर उदय शंकर दीक्षित, प्रोफेसर IIT गुवाहाटी। सर। हाँ,
उसको Okay. Yeah. साउंड दे दीजिए उस माइक में. Acha. Okay. So, respected dignitaries on the dais, Honorable Union Minister of State for Education, Dr. Subhash Sarkar ji, who took pain to come here covering the road journey from his constituency at Bankura to this place, and who has been always encouraging academic institutions since the time he took the charge of minister in Ministry of Education, because in the month of May, he also came to IIT Guwahati, and I hosted him, in fact, conducted his session, and he, in fact, he spent a lot of time, unlike other persons, he stayed and he visited, I think he went to Kamakhya also. So that way, I got a lot of motivated people said that he is there. So he is encouraging, he is from the medical profession and highly spiritual person, and at the same time he is now committed to implement National Education Policy 2020 in our country. So then I must pay my respect to all the honorable members, our representatives, Sri Deepak Prakash ji, who is a member of Parliament Rajya Sabha, Sri Jaiswal ji, who is MLA from Jharkhand, and Sri our Honorable Mayor, Sri Asha Ralka ji, who is also present with us to motivate on this occasion. Then I must say that here our National Institute of Advanced Manufacturing Technology, which has converted from NIFT Ranchi to National Institute of Advanced Manufacturing Technology. It's my board chairman of the Board of Governors, Sri Arjun Wadkar ji, who has, and then Mr. Ajay Chaudhary ji, who is one of the founders of the HCL, in fact, and is a pioneer of, means in some way, to bring computer revolution in our country. So he is also present, and he was also the chairman of Board of Governors. In fact, I happened to attend one selection committee meeting with him in Goa, and I have seen his dynamism in terms of the faculty selection, etc. He is very this one. And then I must pay my respect to Professor Mr. Prasad ji, who is from basically the public sector, our coal fields, central coal fields. So now this is in fact a historic occasion. Why it is a very historic occasion? Because today happens to be Engineers Day also. And this institute is the premier engineering institute. In fact, it will become, one day, it will be unique of its kind. Why it will be unique? Because it is the only institute of manufacturing, National Institute of Advanced Manufacturing Technology, that encompasses, in fact, Industry 4.0 and all these things, okay. Advanced manufacturing is the future, and without manufacturing, engineering is not complete. We engineers particularly say, suppose we design something, now unless it is manufactured, it has no meaning. So we manufacture the things, we add value to the raw material, then only it serves our nation and it impacts our day-to-day population actually. So that is why today, why we are remembering our engineer Bharat Ratna M. Visvesvaraya ji, because he did some work. Many persons, we have a lot of people, and they have done remarkable work in engineering, but the work of Mr. Visvesvaraya, it directly impacted the common public. He created the dams, irrigation system was improved, his model was adopted by other states also, and he served a lot in that his home state, Mysore, and after that, many models were taken by this one, and many of his models are even now used in the field of civil engineering, and that is how that he was visionary. He take interest in the social work also. So that is why we remember him on Engineers Day. Such a great personality stayed with us for more than 100 years.
So today, that a very great thing was done, that in this institute, which is in fact basically in a way I would say that this institute is being remanufactured actually, because it is basically from NIFT to this one. So this is the best example of remanufacturing, that they are, and in remanufactured farm. So unlike common perception, they think remanufacturing is something second-hand thing. No, it is not second-hand thing. Remanufacturing means almost giving new avatar, new form, and then it will have almost the same value. In fact, its value can exceed far more than originally it was that. Because when it will be remanufactured, then new technology will also be put into place. So that is why, so today in this such a type of institute, a bust of that our Bharat Ratna Vishwesvaraya ji has been unveiled on the day of Engineers Day. This itself is a great occasion. And then after that, we are going to have a workshop on futuristic and this one is of this remanufacturing, and it is also from the side of futuristic and advanced manufacturing forum of India. This is also the great initiative by Director Professor P.P. Chattopadhyay, that he thought of such a forum. Nobody could think of such type of forum in India, but he took, and in fact he wanted to involve everyone, and he requested me that I, being from IIT, that please take a lead in this forum. And with the inspiration of Arjun Watkarji, he said that a futuristic forum, manufacturing forum of India should be opened. So we started doing the groundwork. Still we have to do some formalities to make it something like Section 8 company. On that we are doing discussions. But before that, because it is said that more than the talk, action is important. So we have started the work. That first workshop is being organized by our futuristic and advanced manufacturing forum of India. So this is the first workshop of this one, and therefore if the beginning itself is very good, then there is no doubt. Now what is remanufacturing? Remanufacturing means that taking the good part. It is not reconditioning. Reconditioning is different. I give one example, because I happened to start my engineering career from HMT. So I was in HMT Pinjore, and I think after 1 or 2 years working there, one day my HMT watch, it was not in a good condition, it was not working. So I asked my senior colleague that I have to go and repair this thing. He said, don't you know there is now one policy HMT has started, that you give the old watch and they will repair it totally, and it will be something like a new watch. And those days they just take 180 rupee, whereas the original watch was 500 rupee. So although it is, the price is almost 1/3. So then I went to Chandigarh in 17th sector, and I go in the service center, but they took time. After 30 days I got a brand new watch. Basically it is also HMT watch, but they used some components were used, and some components they actually got from their factory. So this is the concept that you have. But one lesson probably that we can learn from the HMT example, although they remanufactured, but they could not keep pace with the changing technology. So watch industry, because competitors came, nowadays nobody uses the mechanical watches, although the quality of HMT watches used to be this one. So when we do remanufacturing, then we have to think that we have to remanufacture, but we also have to see that new technology should be used. So remanufacturing is, in fact, it will solve the problem of sustainability also, because what happens that our Honorable Minister is there, he is from medical profession. He knows that human body, many parts are designed for much more life. In fact, they say our kidney, if it is healthy, it can live for more than 150 years. Similarly, there are other parts, eyes also. So that's why they say that donate your body parts. It is a noble mission that donate the body parts. Then somebody else can see from your eyes, somebody can live with your kidneys, somebody can use liver,
and therefore, and he can be. But only thing that we, of course, in the medical science do not have to capability to put the soul, but engineering field, we can put even the soul, we can put the computer skills, we can put software, we can put many things, and we can make that as good as a product, in fact, much better product with the new software that that can surpass. So in fact, we can start remanufacturing, but for that, remanufacturing to be successful, one stigma should be removed from the common public, that perception that remanufacturing is something that which is basically it will be second hand. No, it is not second hand. Warranty should be given. Warranty should be for 1 year at least, and the cost will be drastically reduced, and the quality. So we take the parts, so there is a scope of our engineers, because we have to see the parts, only those parts have to be used which have the life. And for it to be successful, remanufacturing cannot be done only by academicians. It is industrial activity, so industry involvement is must. And I am very happy that in today's gathering, industry people are also present in large number, and of course the policy makers. Actually, that is why our policy makers, our government has to make the policies. They have to offer the incentives. They have to propagate. If the government wants, then any type of thing can be successful. We have seen in the recent pandemic time how it was managed, how almost 100% vaccination was achieved. It was because of the government effort. If government takes it as a drive that remanufacturing will be encouraged, tax exemptions, etc. will be there, then it will be very successful. So therefore, now I will not speak much on this, because the whole coming days have been devoted that on the talk on the remanufacturing. Most of these talks will be online, and there are experts equally distributed from academia, industry, and even from policy maker side. So I welcome, and I also seek blessings of everybody for this our futuristic and advanced manufacturing forum of India, that is FMFI or FAMFI. In that, you please join, please become the member of this forum. I request Honorable Minister, member and even member of Parliament and our politicians that please encourage our forum, provide some support, and then with the support of this forum, this institute also one day will become one of the leading institute of India. It will be of international standard. I am sure about that. Thank you so much, sir, for your precious words. आज की कार्यशाला पर विस्तार हेतु बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. हमें संबोधित कर रहे थे आज की कार्यशाला में रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर उदय शंकर दीक्षित सर. और अब मैं अपने विचारों के साथ आज के उद्घाटन समारोह में सादर आमंत्रित करती हूँ चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड श्री PM प्रसाद सर को. सर. Namaskar, Johar. Most respected Honorable Union Minister of State Education, Dr. Sarkar sir, most respected, and Honorable MP Deepak Prakash Saab, respected Lakra Madam, Mayor Ranchi. I think Naveen Jaiswal ji is in absentia, and both the Board of Governors, ex and past, both the chairmen on the dais, they are the main, belong from the manufacturing industry, I suppose, and from more than 5 decades. And Dr. Dikshit Saab, Director of the Institute, and I see dignitaries of the dais, respected teaching staff, non-teaching staff, dear students, press and media, and all the participants. First of all, though I am here in the last 3 years, more than 3 years in Jharkhand, I have just heard regarding the institute. I had a chance when Director Saab has invited me to come for this occasion, chance of coming here, and it is a huge campus of more than 60-65 acres. And my greetings on this auspicious occasion of on the Engineers Day, and sir has opened the statue of the Bharat Ratna
Dr. Vishwesvaraya sir, and as Professor Dixit Sahab has told, he has not only preached, but he was practicing engineer, maybe in dams, as a civil engineering, he is an icon of India. And we celebrate every year on this day as a Happy Engineers Day, and we all observe. And coming to this topic of this international remanufacturing capacity, this is a topic which is picking up in the last 2 decades, and a famous book written by the 2 authors, Cradle to Cradle, William Donat and Michael Brownach, German scientist and American architect. In that they write, it is not cradle to this, you have to recycle, recycling is a must, it is not cradle to grave. Once a product is finished its life cycle, it has only 2, either it will go through biological entry, if say we eat fruits and vegetables, after this we throw, or if a product, if it is not going to that biological route, it should come to the technical nutrient instead of biological nutrient. So, and also if you see with the demands of the entire world scenario, as it is a global world, for becoming every year you have to have a growth, you should need at least 1.7 times of the resources. So where from we bring? The resources are limited, as our father of the nation has rightly told at that time only. Earth can only provide for the person's needs only, not for greed. So if you want to have that 1.7 times multiples of these resources, where from we get it? So remanufacturing is a must. And it is last 20 years, it is picking up very much high. As sir has told, he worked in HMT and HMT watches. He recycled at that time. In 40 years back also in our state, when a boy passes 10th class, he used to get HMT watch from his grandmother or father or whatever may be. But we have to focus on this remanufacturing abilities of the nation, and since this is the only institute, this can take, it can lead vis-a-vis, just like Indian Institute of Science. I just seen some of the others are from the next 3 days, Indian Institute of Science, IITs and international speakers are there. But I think my request to the Honorable Minister sir, if the industries also participate with this institute in manufacturing, if they also pool some funds, they can do a better manufacturing processes. Alone in the institute may not come on that way, but luckily Jharkhand has number of institutes like HEC, CCL, SAIL is a robust institute in the foundry and forging technology. Similarly, Tata's well-known landmark institutes and other Aditya Birla Group institutes. So many institutes in Jharkhand. That way, if some amount is pulled and put up to this institute, they can go for more research. Both industry and academy can work together. Even from coal mining side also, there are a lot of heavy earth moving machineries there, whether it is a drag line, shovels, lot of precision is there. We depend on this HEC, BHEL, lot of good public sector companies, and private also like Gemco, Caterpillar and other L&T, private industries are also there. I think both should be there. If you want to take this institute, definitely this is the only institute in India. If you want to leave a mark, definitely some inputs might be needed. Of course, I just had a small interaction of 2 minutes only with the Director Saab. After coming here, I am just feeling it is a country level institute is there. It should, they can take the teaching staff from here, they can take to further levels. Recently in 2019, this Niti Aayog and European Union Research Institute, they have done this same topic titled Resource Efficiency and Circular Economy. They are doing some technical papers, and after 2019, I think last 1.5 years we had COVID, and much of thing could not happen. Maybe it is a physical classrooms. So this is a upcoming branch, and I feel this whatever may be, we should, as Professor Dixit has told, 2 things. One thing, after remanufacturing, the same class should we should get of the article and the warranty. These 2 things, if it is ensured, then there is no point in going for new things. Definitely, this can
and which will fulfill our Honorable PM's vision of Atmanirbhar Bharat, and we can reuse, recycle, remanufacture, and these things we can practice in our things. Secondly, there are 4 or 5 elements in remanufacturing: the return, collection and remanufacturing assessment, and also logistics and regulations therein, remanufacturing processes. Since I am not a technical in this aspect, I just whatever things I have just searched from the net. And investment of manufacturing, I told, in PSUs and in these institutes, it can take it in a long way. Establishment technology and quality testing center for remanufacturing. Establishment of national quality standards for the remanufacturing products. And also, this is a dynamic process of this remanufacturing. From here, we should only go in a forward thinking. We should not go in a backward. So we should aim always, we should be cost competitiveness in the changing world. Technology is changing every day, whether it is IoT of things or the data, big data and everything. Vis-a-vis, if you want to stand, definitely if we can focus on remanufacturing, whatever resources we are having, if you utilize fully, in the years to come, I am sure our country already we have surpassed the economy of UK. The country which has ruled us 200 years, now we already crossed them from $3 trillion economy to $5 trillion, and within by 2030, $10 trillion economy we are going to touch, and we will definitely touch. From this institute and the industries of Jharkhand, the expectation from the country level, Honorable PM or the government, so from our part, if anything, Director Saab, if we wishes, CCL will be definitely will be standing besides them always. Thank you. Thank you for inviting me. बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समारोह के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री PM प्रसाद सर, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का, आपके विचारों के लिए सर, आज के समारोह में आपके संबोधन के लिए। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत के सबसे महान राष्ट्र निर्माताओं में से एक माना जाता है, और आज के इस समारोह में मैं इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन रीमैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्डिंग में सादर आमंत्रित करती हूँ संबोधन के लिए माननीय महापौर रांची नगर निगम मैम आशा लकड़ा जी को। मैम। आज हमारे बीच भारत रत्न विश्वेश्वरैया जयंती के शुभ अवसर पर इंजीनियरिंग दिवस हम सब आज निमैत के इस सभागार में मना रहे हैं और अपने बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं, और हमारे लिए गौरव का क्षण है कि निमैत ने हर बार कुछ नया नया करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार आपने एक राज्य शिक्षा मंत्री को बुलाया, उस समय भी रिसाइकल के लिए आपने प्रयास किया था और उसमें कुछ छोटा काम, और आज आपने जिस तरह से एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण क्षमता निर्माण कचरे के बढ़ते एक चुनौती को स्वीकार करते हुए आपने आमंत्रण किए हैं अपने बीच से डॉक्टर सुभाष सरकार जी, माननीय केंद्रीय मंत्री राज्य शिक्षा भारत सरकार, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारा बहुत सौभाग्य कि आपने निमैत में आए हैं और यहाँ के सभी को एक दिशा देने का काम करेंगे। हमारे बीच में माननीय दीपक प्रकाश जी, आप राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में अभी आप सबको बता रहे थे ऐसे CMD कोल आदरणीय PM प्रसाद जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अपने बीच में श्री अर्जुन वाडकर जी, चेयरमैन निमैत, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आपके सानिध्य में यहाँ के विद्यार्थी और आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अपने बीच में श्री अजय चौधरी जी, संस्थापक
HCL आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में प्रोफेसर उदय शंकर दीक्षित जी IIT गुवाहाटी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और विशेषकर जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं ऐसे PP चट्टोपाध्याय जी निमैत निदेशक, आपका स्वागत अभिनंदन। उपस्थित सभी लोगों का, जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं, सभी छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और विशेषकर आज विभिन्न संस्थान से लोग यहाँ आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि निफ्ट में आना माने कुछ नया सीख जाना। आज जिस तरह से अपने देश में एक इतिहास गढ़ने वाले भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी का मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी बदलती है। हम कहते हैं भगवान के सामने जब हम पूजा करते हैं और प्रतिमा खड़ी रहती है और उस प्रतिमा से अपने मन के भावना अलग से जागृत होते हैं, उसी तरह से जब यहाँ विश्वेश्वरैया जी का प्रतिमा अनावरण हुआ और हमारे स्टूडेंट अगर वहाँ जाएंगे तो उनकी सोच में परिवर्तन आएंगे, एक डेवलपमेंट आएगा, एक विकास की गंगा बहेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्षमता निर्माण होगा, ज्ञानवर्धन होगा। और जब हम राष्ट्र की पुनर्निर्माण की बात करते हैं और राष्ट्रीय स्तर का ये सेमिनार होता है, और ये राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार में अगर हम राष्ट्र की पुनर्निर्माण की बात करते हैं, अभी CMD कॉल बता रहे थे कि हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। हम तो यह कहना चाहते हैं, हमारा देश ने ही सब मैन्युफैक्चरिंग किया है जिसको विदेश ने अडॉप्ट किया है, और जिसको विदेश ने लिया है उसको पुनः हम यहाँ पुनर्निर्माण करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए HEC की अगर मैं बात करती हूँ, तो आज जिस तरह से हवाई जहाज का निर्माण होता है, एक पार्ट HEC ने निर्माण किया है, तो इसको हम पुनः जागृत करने का प्रयास कैसे करेंगे? तो इस निफ्ट कैंपस के आज इस सेमिनार से हम शुरुआत करेंगे कि आने वाला समय में हम कुछ नया करके दिखाने का काम करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से ई कचरा का बहुत भीड़ हो जा रहा है, इसके लिए डिस्पोज कैसे होगा, इसको कोई सोचा नहीं है। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं मेरा देश इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है। श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, और श्रेष्ठ भारत में हमने आत्मनिर्भर की बात करते हैं। तो आत्मनिर्भर कौन बनेगा? मेरा देश आत्मनिर्भर बने। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जो ई डिस्पोज है उसको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, ई कचरा को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आज मैं इस मैक का यूज कर रही हूँ, थोड़ा दिन में खराब हुआ तो हम किसी कचड़े में फेंक दिए, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं रांची नगर निगम में काम करती हूँ। एक मेयर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये कचरा इधर उधर ना फेंके। इनको हमने एक .com किया, कबाड़ी.com, और कबाड़ी.com ने उसको रिसाइकल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो इधर उधर ना जाए और नए भारत के निर्माण में, नव निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका प्रयास आज हम सब लोग कर रहे हैं। तो ये चुनौती है, इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पास क्या नहीं है, हर कुछ है, लेकिन उस हर कुछ में से एक चीज को हम चयन करेंगे। आप जैसे कपड़ा पहनते हैं, नाम देते हैं ब्रांड ब्लैकबेरी का, तो हम कुछ और ब्रांड कर सकते हैं कि हम नया कुछ उत्पादन करते हैं, उसका एक ब्रांड नाम देंगे। HEC में उत्पादन किया हुआ निफ्ट का विद्यार्थी ने जो कुछ नया निकाल करके आए हैं। पिछले बार हमने देखा कि किस तरह से हमने पेपर को प्लेन करने के लिए एक मशीन का निर्माण किया, महिलाओं ने किया। कौन महिला? एक क्लास भी नहीं पढ़ी है, गाड़ी गांव रांची की रहने वाली है, और उन्होंने बहुत अच्छे से इनका निर्माण किया है। तो देखने लायक है ऐसा कुछ ब्रांड कि हम वेस्ट कचरा से कुछ नया कर पाएंगे। ये प्लान करने की आवश्यकता है। आप खुद, आपके पास बहुत आइडियाज हैं, आप बहुत नया कुछ कर सकते हैं। पुराने जमाने में आप याद करेंगे लोगों ने पंखा निर्माण करते हैं। आज भी स्कूल के बच्चे कुछ करना चाहते हैं। स्कूल में अगर जाइएगा और वहाँ अलग अलग टाइम से वो लोग जब प्रदर्शनी लगाते हैं, तो बच्चों को देखिएगा कि कैसे वो सोलर लाइट बना लिए, वो किस तरह से एक बड़ा औद्योगिक जगत को उत्पादन किए, और सोलर के माध्यम से, सोलर सिस्टम के माध्यम से एक बड़ा जगत को लाभ मिलने के लिए कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ सोलर का कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे भी कुछ नया कर सकते हैं। मशीनरी, कोल, सब कुछ है, लेकिन हमको लगता है कि विद्युत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो विद्युत ना हो तो सोलर के माध्यम से हम कुछ करें, विद्युत नहीं है तो कोल के माध्यम से कुछ करें, पानी नहीं है तो पनबिजली भी उत्पादन, सब कुछ झारखंड में है। तो नया करने के लिए हम लोग को एक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो हमें स्टार्टअप की ओर भी जानी चाहिए। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमें नया कुछ करने की आवश्यकता होती है। स्टार्टअप मैंने क्या, आज हमारे पास बहुत सारा चीज हो जाते हैं। हम जयपुर के क्षेत्र में जाते हैं, जयपुर में क्या
है? कुछ है क्या? नहीं है। राजस्थान में कुछ नया उत्पादन करने के लिए नहीं है, लेकिन आपका जो वेस्टेड चीज है उसको करोड़ों रुपया में वो हासिल करते हैं और वहां हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करने का एक मौका मिलता है। हम मुंबई की ओर चले जाते हैं, हम बगल में ओडिशा में चले जाते हैं, खेती कुछ नहीं है, लेकिन उद्योग जगत के कारण आज ओडिशा का लोग में एक व्यक्ति को अपने कमाने के लिए, एक स्टार्टअप खड़ा करने के लिए उनको ताकत मिलता है। तो ऐसे कुछ नया स्टार्टअप हम शुरू करेंगे ताकि हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरह से आपके पास कितना अनुभवी लोग बैठे हैं, इतने अनुभवी जब आते हैं तो हमारा एजुकेशन भी एक अलग टाइप से हो। हमें कुछ स्टार्टअप के क्षेत्र में जाना चाहिए, आत्मनिर्भर की ओर जाना चाहिए। आत्मनिर्भर माने कहने स्वयं को अपने को खड़ा करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर का मतलब ये ना हो कि कोई हमको खिला दिया तब हम खा लिए। अपनी सोच को डेवलप करनी होगी। हमारे पास चौवन्नी है, उसको हम अठन्नी में कैसे बदल सकते हैं, ये सोच रखने की आवश्यकता है। हमारे पास में पैसा दिख रहे हैं। मुझे याद है जब नरेंद्र भाई मोदी से जब मिली थी, मैंने कहा आप इतना डेवलपमेंट कैसे किए? जिस गांव में वो पैदा हुए, बाढ़ नगर में, पानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पानी ढूंढा और उसी पानी से पैसा कैसे आएगा और गांव वालों को व्यवस्था कैसे बनेगी और विकास की गंगा बहेगी और पूरा गांव हरियाली कैसे हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने प्लान किया। अब जब वहां जाके देखते हैं तो यही तो है आत्मनिर्भर भारत, यही तो है स्टार्टअप इंडिया। और जहां से हम अपने धान की खेती को, वहां मसाले की खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से हम नया कुछ कर सकते हैं। आज आपने कोई मशीन तैयार किया है जिस तरह से हम इमली सुखा सकते हैं, उदाहरण के लिए इमली सुखा सकते हैं, साधारण रूप से गांव के महिलाओं को लाभ मिल सकते हैं। ऐसे छोटा छोटा मशीनरी का हम निर्माण कर सकते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता है ताकि उस मशीन से हम कुछ कर सकते हैं। अब बड़ा फैक्ट्री लगता है, चावल का फैक्ट्री, धान से चावल निकालना है। हमारे पास में एक पंचायत में 9 गांव हैं। उस 9 गांव में अगर हमको धान से चावल बनानी है तो एक छोटा मशीन भी हम बना सकते हैं ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है। चाइना के पीछे जाते हैं। अभी जिस तरह से हम टॉयज की बात करते हैं, टॉयज बना रहे हैं। अब भारत में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम अपने यहाँ टॉय का मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते, हम उस देश से क्यों लेते हैं जिस देश ने हमारे देश को हमला करता है। तो हमको सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर से और श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनाने के लिए भी हमको मेहनत करने की आवश्यकता है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, ऐसा विश्वास दिलाते हुए आज आपने नव निर्माण विषय पर काम किए हैं। तो मैं इतना कहना चाहती हूं कि भारत के नव निर्माण में आज इस इंस्टीट्यूट में आप सबका योगदान रहे और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कुछ नया करने, ऐसा संकल्प लेते हुए अपनी आप सब लोग संकल्प ले, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके विचारों के लिए कि किस तरह से हमें अपने शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना है। और अभी अभी हम सब ने देखा कि माननीय विधायक, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, माननीय विधायक हटिया विधानसभा क्षेत्र श्री नवीन जायसवाल जी का हम सबके बीच में आगमन हो चुका है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें। और सौम्य श्री को मैं इनवाइट कर रही हूं कि पुष्प गुच्छ से माननीय विधायक हटिया विधानसभा क्षेत्र श्री नवीन जायसवाल जी, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें, उन्हें पुष्प गुच्छ प्रदान कर। और आज का ये उद्घाटन समारोह अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप होने जा रहा है जो कि चलेगा और इसमें दुनिया भर के पुरोधा, विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, जिन्हें शायद ही हमें सुनने का मौका मिलता है, उनको जानने सुनने का मौका मिलेगा। और आज के समारोह में हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय हम सबके बीच में श्री माननीय श्री दीपक प्रकाश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, सर आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आपके संबोधन विचारों हेतु। The International Workshop on Remanufacturing Capability Building के इस सेमिनार में डाइस में बैठे हुए भारत सरकार के सम्मानित शिक्षा मंत्री, और केवल शिक्षा मंत्री ही नहीं है,
बल्कि मैं कहता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एक पार्ट। मैं इनके साथ सदन में रहता हूं और देखता हूं कि किस प्रकार से एक आदमी का डॉक्टर शिक्षा क्षेत्र के डॉक्टरी करने का काम कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र बेहतर हो, स्वावलंबी हो, इसके लिए लगातार काम करने वाले। हम लगातार इनके साथ कई वर्षों से हमारे काम करने के साथ में का अनुभव भी है। ऐसे हमारे साथ डॉक्टर सुभाष सरकार जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, इस मंच पे बैठे सम्मानित इस राज्य की राजधानी की प्रथम नागरिक बहन आशा लकड़ा जी जो मेयर हैं, इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक सम्मानित नवीन जायसवाल जी, हम सबके बीच में इस मंच पर बैठे हुए चेयरमैन बीओजी सम्मानित अर्जुन वाडकर जी, फाउंडर एसीएल श्री अजय चौधरी जी, सीएमडी श्री पीएम प्रसाद जी को मैं बेहतर ढंग से जानता हूं, जिन्होंने देश के को आगे बढ़ाने के लिए कोल सेक्टर में सीसीएल के सीएमडी के रूप में बेहतरीन और कामयाब काम करने वाले ऐसे सम्मानित पीएम प्रसाद जी, आईआईटी के प्रोफेसर सम्मानित उदय शंकर जी, और मेरे सामने बैठे हुए पार्थो चट्टोपाध्याय जी जो इस संस्थान के निर्देशक हैं, हमारे साथ बैठे हुए नौजवान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष किसलय तिवारी जी, और सामने बैठे हुए सम्मानित सभी इस सभागार में बैठे हुए भाइयों एवं बहनों। सबसे पहले मैं शब्दों से आज के दिन के लिए जिसको हम स्मरण कर रहे हैं, ऐसे श्री मोक्ष गुंडम विश्वरैया जी की जयंती है, मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। हम सबको जानते हैं कि उनका जन्म 1860 में हुआ था और एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे, और वो केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में उत्कृष्ट सेवा की समाज की, और इसलिए केवल वैज्ञानिक के क्षेत्र में ही नहीं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देश और दुनिया में अपना नाम को रोशन किया। और उन्होंने वैज्ञानिक के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि जो मूलभूत भारत की समस्याएं थी, किसान और किसानियत के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था में अपना योगदान दिया कि किस प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में विज्ञान और वैज्ञानिकों का योगदान होना चाहिए। भारत के पेयजल के संबंध में, ड्रिंकिंग वाटर जिसकी हम आज चर्चा करते हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने अपने योगदान देने का काम किया। इसलिए मैं उनको अपने शब्दों की वाणी से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं इस समारोह के आयोजक को। और बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में ये आयोजन सफल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए यहाँ के देशवासियों को एक नए भारत का संकल्प लेने का। और नया भारत कब बनेगा, आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा, स्वावलंबी भारत कैसे बनेगा, ये संकल्प ये कार्यक्रम के माध्यम से होगा, इस आयोजन के माध्यम से होगा, इस संगोष्ठी के माध्यम से होगा, और ये संवाद के माध्यम से होगा। हम सब कोई जानते हैं कि देश में लाल बहादुर शास्त्री को हम सब कोई जानते हैं, उन्होंने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान का। अटल जी ने थोड़ा उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान का नारा दिया है, जिसको आरएनडी का क्षेत्र हम कहते हैं। आरएनडी के क्षेत्र में, और जब आरएनडी का क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी नई क्रांति आएगी, नया रेवोल्यूशन आएगा, और नए रेवोल्यूशन के माध्यम से भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा,
भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। हम सब कोई जानते हैं, हम सब कोई जानते हैं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को जानती हैं, संस्कारों को जानते हैं। और 2 दिन के बाद तो ही किनका हम सब लोग पूजा करने वाले हैं? किनका पूजा करने वाले? विश्वकर्मा जी कौन थे? विश्वकर्मा जी उस वक्त के आधुनिक इंजीनियर थे और वैज्ञानिक थे, और आज 2 दिन बाद हम उनकी पूजा करने वाले हैं। हम जानते हैं, आर्यभट्ट को जानते हैं, हम चिकित्सा क्षेत्र में हमारे ऐसे कई, जिसको आज हम सब पतंजलि के नाम से जानते हैं, और वैसे वैज्ञानिकों का ये देश और ये तपोभूमि। इसलिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि R&D का क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग, जिसको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं, ये दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। बिना अनुसंधान किए हुए आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे और बेहतर नहीं कर सकते। इसलिए आज का कार्यक्रम ये इंटरनेशनल लेवल का है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। भले हम झारखंड की धरती पर कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का जो संकल्प है, और हम सबको ये जानते हैं कि आज प्रदूषण की हालत है, पर्यावरण की चिंता हम कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। मैं प्रधानमंत्री जी के एक भाषण को सुन रहा था कि किस प्रकार से दुनिया आज ग्रस्त है, परेशान है पर्यावरण के क्षेत्र में, और उसका सबसे मुख्य कारण है कि हम बढ़ते हुए आबादी के देश हैं। दुनिया चाहती है कि भारत एक नया रास्ता दिखाया, और उसी में से सोलर एनर्जी के मामले में भारत सर्वश्रेष्ठ दुनिया में एक नया देश उभर करके आया है। इसलिए हम सब लोग आगे बढ़ते हुए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। मेरी शुभकामना है, एक सांसद की हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से, कि इस इंस्टीट्यूशन को, इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में लगे हुए लोगों को जब भी जरूरत होगी, तो मंत्री जी तो यहाँ उपस्थित हैं ही, एक सांसद के हैसियत से मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, और आपकी आवाज़ ही नहीं बनूंगा बल्कि उन आवश्यकताओं को पूरा करने का भी मैं प्रयास करूंगा जो आपके अवरोध पैदा करेगा, बाधा पैदा करेगा, और आपके अवरोध और बाधा दूर करने में मैं आपको सहयोग करने के लिए भी मैं उपस्थित हुआ हूं। मेरी शुभकामना है कि आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो और भारत फिर से विश्व गुरु बने, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समारोह के विशिष्ट माननीय अतिथि महोदय, माननीय सांसद राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश जी का। और आज के समारोह में, जैसा कि हम सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप हो रहा है, और आज इसका उद्घाटन समारोह मैं संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक हटिया विधानसभा क्षेत्र श्री नवीन जायसवाल जी को। आप हमारे आज के विशिष्ट अतिथि भी हैं सर। आज इस अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप समारोह में मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय सुभाष सरकार जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित रांची की मेयर श्रीमती आशा लकड़ा जी, मंचासीन सभी गण्यमान्य पदाधिकारीगण, इस संस्था के डायरेक्टर साहब, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं अपनी ओर से आज इंजीनियरिंग दिवस भी है, इसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज का देश और आज ही के अखबार में झारखंड के बारे कई चर्चाएं लिखी हुई है कि चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे हमारा यहाँ पर जो कल कारखाना है HEC जैसे संस्था भारी अभाव के बाद भी संघर्ष करके भी अपनी प्रतिभा दिखा रही है और इसमें झारखंड अपना नाम आगे बढ़ा रहा है। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा
कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके लिए जो पोटेंशियल भारत देश के युवाओं में है, जो इनमें आत्मविश्वास है, केवल भारत को ही नहीं दुनिया को हमारे नौजवान, चाहे वो नासा हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, यहाँ के नौजवानों में ईश्वर ने एक प्रतिभा दी है। और हमारा जो इतिहास है कि ये देश हर मामले में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हमारा कल्चर हो, शुरू से धनी रहा है। ये देश कई वर्षों तक गुलामी में रहा। यहाँ की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के मूल भावनाओं को आक्रमणकारियों ने सुनियोजित ढंग से नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद भी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और ऐसे प्रतिभावान लोगों के हाथ में देश की सत्ता है और एक विजन के साथ भारत कैसे आगे बढ़े, हमारे संस्थाएं कैसे आगे बढ़े, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके देश आगे बढ़ रहा है। आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से हर संस्था अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। माननीय मंत्री जी प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और सर्जन भी हैं और अपना पूरा करियर जो उन्होंने अपने डॉक्टरी पढ़ के और आज समाज को सेवा दे रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि ऐसे लोग आज शिक्षा मंत्री के रूप में यहाँ पे हैं और आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और संस्था अपना ऑटोनमस बॉडी के नाम पर भी संघर्ष कर रहा है कि यहाँ पर इनका अपना स्वामित्व हो। और जिस तरह से इस परिसर में हम लोग बैठे हैं, मैं अपनी ओर से बधाई शुभकामना देता हूं। कई वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, लेकिन आने वाला समय भारत का है, युवाओं का है और हम लोग मिलजुल कर जहां कमी है अपने देश में, आप कहीं विदेश जाएंगे तो वहां मैं देखता हूं कि वहां पर अपने देश के प्रति क्रिटिसाइज लोग नहीं करते हैं। जहां कमी है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं कि हमारा देश सबसे अच्छा देश, और उसी भाव के साथ हम लोग अपने देश के प्रति समर्पित होकर देश आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, जो हमारे संस्थान हैं जहां कमियां हैं उसको सरकार के स्तर से, जनप्रतिनिधि के स्तर से, जहां भी हम लोगों की आवश्यकता होगी, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते जहां भी आप आदेश करेंगे मैं सहयोग करने का वचन देता हूं। आप सबों को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक हटिया विधानसभा क्षेत्र श्री नवीन जायसवाल जी का आपके संबोधन हेतु। और आज के समारोह में विनम्र निवेदन करती हूँ संबोधन हेतु माननीय विशिष्ट अतिथि चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियाम्ट श्री श्याम एच अर्जुन वद्देकर सर को। सर Well, good morning everybody. आज बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी हिंदी में कुछ सभा में मैं सम्मिलित हूँ, इसका मुझे बहुत आनंद होता है। कल ही हिंदी दिवस हो गया और मैं सोचता था कि क्यों ना हम सब आयोजन हिंदी में शुरू करें, लेकिन मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, उधर ये मौका नहीं मिलता है, बहुत कोशिश से मिलता है, लेकिन आज रांची में मुझे अवसर मिला है। सो मेरे मन ही मन में मैंने कहा कि ग्रीटिंग तो मैं कम से कम हिंदी में दूं, बाकी मेरा भाषण जो है जो तैयार किया हूँ उस अंग्रेज़ी में ही दे दूंगा। सो पहले अपने जो अतिथि है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री
सरकार जी, हमारे यहाँ के रांची के स्थानीय खासदार एंड द फर्स्ट लेडी ऑफ रांची अलका जी और जायसवाल जी यहाँ के एमएलए, मुझे बहुत खुशी है कि इस संस्थान में हम जो लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं उसको ऑटोनॉमी देने के लिए हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए प्रोग्राम बनाने की सोच रहे हैं और कुछ बन भी गए हैं। मुझे खुशी है कि इस साल से हम 2 नए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रयास में हमारा पहले कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन क्या बोलते कि जो रियल स्पिरिट रहता है, जो मन ही मन की बात जान लेते हैं, तो हमारे विधायकों ने मन ही मन की बात हमारी जान ली और वही का उद्बोधन इस पोडियम से, इस डायस से किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे खुशी है कि द यंग जनरेशन ऑफ टुडे, यंग जनरेशन इज़ हियर। आई एम श्योर दे विल टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम दिस स्पीचेस एंड विद दिस मेरी हिंदी तो यहाँ ही मैं खत्म करना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पूरी करता हूँ। और मेरा जो स्टिपुलेटर में से मेरे जो भी कुछ विचार आज के जो सब्जेक्ट है रीमैन्युफैक्चरिंग का, उसके बारे में आपके साथ शेयर करने हैं, वो मैं शेयर करता हूँ। Ladies and gentlemen, it is really gives me a great pleasure to be here on the occasion for this program on the remanufacturing capacity building seminar. We are aware of importance of manufacturing industries, as the manufacturing industry generate wealth to add to GDP of the nation. In the Indian economy, the share of industry sector in GDP is around 27.5%, and 15.3% is from manufacturing industries. Honorable Prime Minister wished to have this share to make it double, that is around 30%. That is from contribution of manufacturing industries. The increase will give stability to national economy. This underlines the importance of manufacturing industries. And the manufacturing industries add to the value of the products. And while dwelling on this statement, it is obvious to think what happens to the goods at the end of life of the product. And here we come to the today's subject. You know, the mounting volumes of end of products and waste has emerged as the major challenge of 21st century for sustainable economic growth across the globe. Amidst the concern, as Mr. Prasad ji has referred to the famous author, I also quote the William McDowell proposed the concept of circular economy. And in his popular book, Cradle to Cradle, context of the sustainable growth of the manufacturing sector, circular manufacturing is emerging as a futuristic technology across the globe. It is defined as steps required changing the product into a new with at least equivalent performance and warranty of a new. Linear manufacturing of the product is made from new raw materials and follows the typical linear economy model. Products once made get consumed, end up as a waste and gets discarded or recycled. However, recycling of used components also leads to loss of energy and value that product embodies. On the contrary, remanufacturing presents a concept of circularity with an aim to phase out the waste by bringing end-of-life components back into economy and as input to produce newly manufactured products, retaining the embodied materials and energy with enhanced performance and features. Remanufacturing doesn't stop at giving you the same product at the same quality, but it can enhance the quality parameters also. Remanufacturing is rapidly adopted across the globe as an emerging variant of the sustainable manufacturing and in turn, sustainable society. Essentially, this technology is aligned with 9 out of 17 goals of Sustainable Development Agenda 2030 launched by UNESCO. Goal 12 in particular, that is responsible consumption and production. Let us look at the current scenario. Internationally, as an industry,
Manufacturing has already been established in the USA. Remanufacturing is established in USA, European and Asian countries for a long time. Globally, the remanufacturing components market is projected to grow at CAGR 3.5% to reach market size of US dollar 5 billion by 2027 from US dollar 3.8 billion which was there at 2019. Key manufacturers like Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Construction Machinery, and then the white goods manufacturers like Liebherr, Epiroc, Atlas Copco, JCB, Volvo Construction Equipment are already pursuing remanufacturing activities. They don't discard their machines and equipment, they recall, they don't refurbish, but make it totally new and give it to you with added parameters of the performance. In different parts of the globe, they are doing this. And they show about 30% cost saving in remanufacturing in comparison with the traditional manufacturing route of the original components. China has exerted immensely in recent years to promote the sustainable and healthy development of remanufacturing industry based on Made in China 2025 plan. Official statistical data from China Construction Machinery Association in 2014 indicated that product ownership of engineering machinery reached as high as 7 million, now 80% of which exceeded warranty. Look at the volumes, what they're talking about. Similarly, in USA, has the largest industry scale exceeding $75 billion. The European Commission listed remanufacturing as a research plan in Horizon 2020. In fact, Horizon 2020 is the plan they have made to enhance and boost the manufacturing activities, because in European economy, they realize that the employment potential is only in the manufacturing industries. Earlier, otherwise, they were complacent with the investment patterns, what they have made globally. They were getting the revenue and returns out of their investment and they are happy. But when the employment problem came in those countries, they prepared this document. The learned people from European Union, they come together, they learned this document of Horizon 2020. And that is from there, so many concepts evolve, including digitization and Industry 4.0. And this one of the important concept is the remanufacturing. The remanufacturing industry in UK can create 5 billion pounds of gross national product, and in East Asia, Japan exports 1/3 of its remanufactured products and earn high profits from such practices. This is what we have seen the scenario, what the international is. Now look at our nation, the nationally, in Indian context, though this concept is now, in terms of implementation and adoption, however, remanufacturing has been considered in the priority list by Government of India. In the status paper titled Resource Efficiency and Circular Economy, Current Status and Way Forward, published by Niti Aayog and European Union Resource Efficiency Initiative, EU REI, in January 2019, establish of an industry body has been recommended to encourage the growth of remanufacturing industry in India. But however, the propagation of this concept, this is the first platform on which we are doing this. In addition, the draft National Resource Efficiency Policy published by International Cooperation Division of Ministry of Environment, Forest and Climate Change in July 2019 recognizes manufacturing as one of the keys to drive the resource efficiency. Remanufacturing, of course. It also identifies the need of training in remanufacturing industry to adapt the need of product certification schemes to provide the legitimacy and credibility to remanufactured products. Besides environmental benefits, potential of remanufacturing to create new jobs across all the skill categories. Because there is no product or no phenomenon left for the remanufacturing. While after thinking of all these things, then let us look at a couple of advantages what this remanufacturing concept will give. Compared with new components, remanufactured components save more than 60% of energy, 70% of the material, 90% of the water, 80% of the less pollutant is saved on the pollutant emissions, and 80% of the value retention, and in totality,
as far as cost is concerned, cost of product is concerned, it is 50 to 70% less. As less energy, less material, less labor is needed and less investment, the cost of the remanufactured product parts can be lower. So certainly it will help to the consumer also. With this phenomenon, the advantage major is that this will help in R&D, knowing design improvements to be made in the newer products for considering the concept of this remanufacturing. Because you have to think of remanufacturing phenomenon while you are designing the basic product, and that will be a convenient, and this phenomenon will come in practice very soon. Will be cost effective. Selling remanufactured product as good as new can be sold at lowest cost to the consumer. And the third most important advantage is that it will help in thought process of optimization when it comes to the remanufacturing of existing products, since the goal is to make it is as good as new and not just to refurbish it. That's the difference. If you, after looking this advantage, if you look at the applications are several, in several areas which remanufacturing would find applications, specifically across the spectrum, heavy machinery, automotive, electronics, healthcare, and other promising areas. Available technologies, the remanufacturing processing includes 3 key activities. In the first one, type of damaged components along with the nature and intensity of damage are identified essentially by application of non-destructive methods. We know I think the engineering students, they are aware of the non-destructive testing. In second one, the defects are eliminated by application of advanced machining techniques. Even there are the electrochemical machining techniques are also coming up. In the third activity, part dimension, geometry, and integrity are established by application of appropriate surface engineering methods. Remanufacturing technology relies on Industry 4.0 framework, integrating the circular supply chain model with the physical activities like collection, warehousing, integrity assessments, product design, and life cycle management and processing. Here, remanufacturing embraces the existing manufacturing practices and integrates that with the digital technology. Now, having said this, let us look at the challenges. The remanufacturing activities conducted across the countries, countries and the products. OEMs and the third-party companies have identified the economic, environmental, and social benefits on the hand, and the challenge like technical barriers, inefficiency, and lack of unified standards of remanufacturing products, regulations, conflicts among the OEMs and third-party business models. These issues are related, including the cross-border logistics. Therefore, to adapt, remanufacturing as an important pillar of circular economy in India is paramount importance, and this proposal is targeted for undertaking the techno-economical feasibility analysis of remanufacturing India. With this symposium, at the end of it, we can think of the suggestion. Aim of the workshop, in short, is that in view of infinite availability of end-of-life products of all categories at the demographic dividend, scope of employment across the skill level, scope of involving citizens across the income level in economy, economic and environmental benefits, and most importantly, favorable government policies for driving inclusive sustainable agenda. India is rightly positioned to become the remanufacturing hub for the world burdened with the end-of-life products. That certainly we look forward. It is apparent from the subject areas and the eminent experts furnished in the schedule of technical sessions that this workshop aims to identify the scope and challenges in design and application of remanufacturing and envisages to evolve framework of capability building in the areas of circular supply chain, testing and integrity assessment, flexible process technology framework, intelligent and integral industry 4.0 platform, business model, and so on. It is also involved, I'm talking about this workshop, it is also envisaged to evolve DPR in the pursuit of promoting customized skill,
knowledge and human resource for driving entrepreneurship-oriented manufacturing businesses. This is another avenue whether the entrepreneurs could think of. The remanufacturing industries are at nascent stage, and I'm sure this kind of programs will accelerate the growth of this phenomenon. This group of academicians and visionary leaders of manufacturing industries will contribute successfully to march towards this development in manufacturing industries. The eminent group of FOMFI will also exert immensely towards these efforts. FOMFI is a forum getting established by NIAMT of an eminent scientist, academia, and from the eminent persons from the industry, which will work towards the futuristic manufacturing avenue, which is the only forum which is getting created, as just now referred with the concept of Professor Chattopadhyay, and now we all are there to be with him for the purpose, and very soon it will take a formal shape, and this futuristic and advanced forum of India, the only kind of forum in the country, will lead in this. And we know that the government of India is making efforts to achieve the $5 trillion. My friend just now quoted, it will be a $10 trillion by 1930. So certainly, if somebody dream big, then only they achieve the big things. So we have to forget about the 5 trillion. Now we have to start saying 10 trillions. So I'm confident that this will be a complementary exercise that indulge in the remanufacturing industries. The presence of Honorable Minister is motivating, and I am thankful to the same. I profoundly extend my thanks to the learned faculties of this symposium, and also interested to the attendees of the program. And as I said at the beginning, I am thankful to the leadership of the Ranchi present over here for their encouraging words. Thank you all. Dhanyavad, sir. बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे आज के इस समारोह के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियाम्ट श्री श्याम एच अर्जुन वदकर सर का एक बार पुनः जोरदार तालियों से सर का आभार प्रकट करें। और आज के समारोह में निवेदन करती हूँ समारोह के माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, फाउंडर HCL एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री नियाम्ट रांची श्री अजय चौधरी सर से आपके उद्घाटन भाषण हेतु। सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जब भी मैं इस इंस्टीट्यूट में आता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि करीब 1-1.5 साल मैं डायरेक्टर साहब के साथ काम कर चुका हूं एज चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सो एक स्पेशल लगाव है मेरा इस इंस्टीट्यूट के साथ। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं यहाँ, और उसके साथ श्रीमती आशा लाकड़ा जी और नवीन जायसवाल जी और दीपक प्रकाश जी और मिस्टर प्रसाद एंड सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो हैं यहाँ वो IIT गुवाहाटी से हैं। उन्होंने काफ़ी एनकरेजमेंट दिया है इसमें, और इसके साथ मेरे को लगता है कि आपको चट्टोपाध्याय साहब को बहुत सपोर्ट देंगे आप इस प्रोग्राम में, और इस तरह के कोर्स भी डेवलप करेंगे जिसमें ये इंस्टीट्यूट रीमैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ाए। So with that, I think what I'd like to mention is that today we celebrate Engineers Day, and it's named after one of our greatest engineers. And what do engineers do? They really solve problems. And that's what Dr. Vishveshwaraya did when he started out. There was a huge problem of drought
huge problem of floods in those areas, both in Karnataka and in Hyderabad. And he created the Krishna Raja Sagar Dam and Usman Sagar, which he has left as his legacy. So I think that really tells you what a great engineer he was. Just like him, a lot of engineers have contributed to building this great nation of ours. If you look at Indian engineers, they've created the great software industry of this country. And now, hugely contributing to creating the hardware revolution, the electronic revolution in this country, which I am very much part of. So I think manufacturing occupies a very, very important place, and that's where engineers come in, because they need to be part of this whole revolution. An interesting part is that till now, very few startups were interested in manufacturing. But since I'm very deeply involved with startups through many funds and through the Indian Angel Network, I'm starting to see that a lot of new companies are coming up which are going to design and manufacture products in India. So I think that's a very major change that's taking place, and engineers are really at the center of it all. Now, if we look at the Prime Minister's saying something very important. He launched a global initiative, and this is what I like about the Prime Minister. We always think in terms of, inhone ye kiya, hum bhi ye karenge. No. We have to think like this, the way Prime Minister thinks. His vision is, why don't we be leaders in the world? Okay, that's the way he thinks. That's the way we have to think also as a country. So, therefore, the Prime Minister launched a global initiative, and he called it LIFE. Lifestyle for the environment. Circular economy is an integral part of our culture, he said. But now it has gained a lot of attention due to serious challenges posed by climate change. He has also talked about, interestingly, reduce, recycle, reuse, redesign, recover, and remanufacture. So he specifically talks about remanufacture. Two major initiatives are being taken up in the country. First of all is creating a repair policy. And secondly, creating remanufacturing as a strategy. Both of these will result in reducing waste, and in the case of electronics, आपने बोला था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को किस तरह से कम किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और how do we reduce this e-waste? We must create a repair economy. We must open up the country for anybody to repair any product. And I am very deeply involved with the Ministry of Consumer Affairs. As a matter of fact, my foundation is doing some research work on this, on advising the Consumer Affairs Ministry on what should be the elements of a repair policy. So I think repair policy will open up 4 sectors as identified by the government, where consumers can go to any repair company or shop for repair of any product. Electronics, white goods, automobiles, and farm equipment will be the first 4 areas that will be picked up. So I think this is going to be a very important part for us, because through repair economy, we can create huge number of jobs. You know, software created so many jobs, but the number of jobs that manufacturing can create, and remanufacturing can create, and repair can create is phenomenally higher. And this is something that we must understand as a country, that this is really where we need to go. Bain has talked about $1 trillion export opportunity for manufacturing in just 5 sectors. So I think there is a big place for manufacturing. We are very, very small in manufacturing today as part of our GDP. We need to increase it by at least 10 to 15% more. I'm happy to see NIAMT take the lead in creating a workshop that will help create this strategy for capability development.
we must also create a curriculum here in NIAMT to teach this technology. And this, aligned with what we have already worked out, Industry 4.0, makes a great combination. And this should be the premier institute, not just in India, but for the region. Please don't think about India anymore. Let's be leaders, let's not be followers. There's a lot of confusion, and I think Arjunji specifically talked about this whole issue of reconditioning, refurbishing, remanufacturing. In case of remanufacturing, each part, by the way, is checked to ensure that it meets current engineering drawing, that it's absolutely current. So a lot of people have this misconception about reconditioning is the same as remanufacturing, etc., etc. It's absolutely wrong. What you really get is a new product, just the way it would have been designed and manufactured today. And it's called equivalent to new. ETN is the way they define it. So I think, interestingly, this is being done globally, but let's now take that position that we are going to do it on our own. And I think there's a great opportunity for Indian manufacturing to embrace this strategy. This will open up a new market at a lower price. A lot of people who cannot afford to buy new machines can buy remanufactured product because it's absolutely like new, but maybe 30% lower price. So I think there is also, this is where I see a great opportunity for exports also from the country. There are so many countries like in Africa which need machinery. They can't afford to buy the new machines. We can be the export for opportunity for this part. So I think mainly you will see this in mechanical products, but verticals like aerospace, electrical apparatus, heavy duty and off-road equipment, locomotives and medical devices, and to some extent you will see this in IT equipment also. Interestingly, many global companies have special brands for such products. And therefore, these kind of brands are created to give confidence to the consumer. GE Healthcare sells it under its brand called Gold Seal. Many hospitals that cannot afford new equipment go for this. Applied Materials, which I'm very much deeply involved with because it's in the semiconductor area, a lot of semiconductor manufacturing that's happening in the world today is happening in legacy equipment because that's where the big market is. In India, we don't need the latest semiconductors. We need semiconductors that are actually required for this country, for white goods, automobiles, etc. So there's a lot of confusion that, we must get the latest. No, it's not required. We as a country can go and get second-hand applied materials equipment from people who are actually supplying it or remanufactured. I think that will give us great benefit in terms of cost of manufacturing. So I envisage a very bright future for remanufacturing in this country. And I think finally, remanufacturing manifests itself as the confluence of Make in India, and this is something that I learned from the director. He was talking about it, and I said, I'm going to repeat this from what he said to me. It's the confluence of Make in India, Atmanirbharta, and SDG 2030. So we should consider the relevance of a national initiative on remanufacturing for augmented lifestyle. And he calls it Nirmal. I think it's a very nice name. So I think with this, I'd like to say thank you to everybody for listening to me. I know it gets very boring after so many speeches, but I hope we will all look forward in this institute to creating a remanufacturing program. And lastly, I think certain commitments have been given. आप लोग सबने बोला है कि हम इस institute को support करेंगे. Please ensure that it becomes an autonomous institute. Absolute requirement. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं सर. माननीय विशिष्ट अतिथि फाउंडर एचसीएल एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियाम श्री अजय चौधरी सर का. और
आज के उद्घाटन समारोह में वक्त हो रहा है कि हम चिर प्रतीक्षारत थे, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें कब अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय के विचारों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। तो नियामट में आयोजित द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन रीमैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में हम सभी गर्व की अनुभूति से पूर्ण भरे हुए। समारोह में गरिमामय उपस्थिति माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी का माननीय महोदय से सादर अनुरोध करती हूं आज के समारोह में आपके मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन हेतु। सर। सबको जोहार, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उनके संबोधन में विषय अनुप्रवेश हिंदी में कहने के आग्रह किया। उनके ये निर्देश अनुसार मैंने कोशिश करूंगा। हमारे बीच अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज NIAMT रांची, श्री श्याम H अर्जुन वाडकर जी अभी उपस्थित है। अच्छे से जोर से तालियां बजाना चाहिए ना। बहुत सारे अनुभवी साइंटिस्ट, बाहर से भी बहुत आदमी ये सुन रहे हैं। हमारे यहाँ एक लाइव होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए। हमारे बीच संस्थापक HCL और अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स NIAMT रांची श्री अजय चौधरी जी, हमारे NIAMT के डायरेक्टर श्री पार्थ प्रतिम चट्टोपाध्याय, माननीय खासदार श्री दीपक प्रकाश जी, माननीय विधायक हाथिया श्री नवीन जायसवाल जी, माननीय प्रथम महिला और रांची शहर की कॉरपोरेशन के मेयर श्रीमती आशा लाकरा जी, श्री PM प्रसाद जी, अध्यक्ष कम मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल कोलफील्ड्स, और हमारे बीच गुवाहाटी से आए हैं बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक प्रोफेसर उदय शंकर दीक्षित जी फ्रॉम IIT Guwahati, all the distinguished guests, faculty, staff, students, friends from the media, ladies and gentlemen who are also connected on the onlines. It's a great pleasure for me to be a part of inaugural program of the International Workshop on Remanufacturing Capability Building, organized by the National Institute of Advanced Manufacturing Technology, Ranchi. I would like to wish you all a very happy Engineers Day. National Engineers Day is celebrated to recognize the honor, the achievements of the great engineer, Sri Mokshagundam Vishwesvaraya. I am glad to share that I have got the opportunity
to inaugurate the bust of CM Vishwesvaraya along with all of you. CM Vishwesvaraya was recognized for engineering the Krishna Raja Sagara Dam located in Mysore. The Krishna Raja Sagara Dam is the biggest landmark in Mysore, dating back to the 1930s. This 130 feet high dam is not just a popular tourist attraction, it is also the source of irrigation and drinking water for large parts of Karnataka. Also, he was one of the chief design engineers for bringing up a system for flood protection in Hyderabad. Dear all, CM Vishwesvaraya is also known as the father of Indian engineering because of his enormous contribution to the innovation in the field of engineering and the development of society. Once again, I wish a happy Engineers Day to all those smart minds who are constantly exploring the opportunities to create something innovative. And after 2 days, we'll pay our regards to our ancient engineer Vishwakarma only after 2 days. Moving forward, I would like to share a slok from the Adhyay 6 of Srimad Bhagavad Gita. Uddhare datmo tatmanam tatmanamo sadayat atmaivo hatmano bandhuratmaiva ripuratmanah. It means elevate yourself through the power of your mind and not degrade yourself, for the mind can be the friend and also the enemy of the self. Dear all, the national education policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly into transforming India sustainably into an equitable and vibrant, keeping the Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam as the core and providing high quality education to all, thereby making India a global knowledge superpower, knowledge society. Moving forward, I would like to say that ancient India has been bestowed to the world in the field of astronomy, medical science, mathematics, yoga, fine arts, surgery, civil engineering, mechanical engineering, in which not text and scriptures, Vedas, Puranas, Upanishads, Samhitas, etc. treasures, and we should consider them as gems of utmost knowledge. These scriptures and texts help one to evolve in one's life. These have immense wisdom and insights which are very relevant in modern times as well. Dear all, when looked closely, sustainability is seen in everything our forefathers practiced, from clothes to utensils, from food to lifestyle. Their choices prove they lived a sustainable and zero waste. This is very important. Now that the consequences of our lifestyle choices are bare open in front of our eyes, it is the need of the hour to rekindle the choices we made. I would like to quote some practices of a sustainable culture from the past. Dear all, neem comb have been used in India for centuries. Neem and bamboo twigs were used as toothbrushes. People knew of the antifungal and antibacterial properties of neem and bamboo even back then. It was known to
5,000, 6,000 years back. No wonder we see bamboo tooth brushes and neem comb making their big comebacks as an alternative of plastic brushes and combs. Dear all, India is a land of rich herbs and medicinal plants. Milk and turmeric were widely used in skin care routines. Berries like Rita, soap nuts, amla, Indian gooseberry, and shikakai were used in hair care. Skin wax was made of products like sugar and lime. Dear all, the important part is that all the natural products like Rita, amla, shikakai, etc. are all zero waste and do not pollute the planet. They are not harsh on our skin and hair, but are very effective at the same time. Back to them. The utensils which were made of iron, aluminium and copper. The minerals and medicinal factors were well known to them. In the past, clothes were mainly made of cotton and silk. These fabrics, that means cotton and silk, these are 100% biodegradable. A single piece of cloth went through multiple usage cycles before it was dumped. Our culture teaches us to respect nature and to understand that we are just a part of this ecosystem. This is very important. We are the part of this ecosystem. This feeling is very important, in which we coexist with their species, with other species. This is all animals. Even we include the plants also. These are many such references from which we can learn about a sustainable lifestyle. Ancient Indian culture is a great treasure of sustainability tips, and we must leverage it for our learning. Today, the manufacturing of expensive, long-living investment goods, machine tools, jet fans, military equipments, or automobile engines is extended to a large number of consumer goods with short life cycles and relatively low values. Reuse is an alternative to material recycling to comply with recovery rates and quantities as well as special treatment requirements. Essentially, any product that can be manufactured can also be remanufactured. Which can be manufactured? That also can be remanufactured, and at the level of same guarantee, same category, everything is almost exactly same, and sometimes efficacy may be more than that one, previous one. In order for a product to be considered remanufactured, most of the component must be used, although some of them can be new if the older parts are too defective to be salvaged. Remanufacturing thus has two underpinnings. One is economic and the other is public or governmental regulatory requirement. This is very important. Regulatory requirement is required. The current climatic situation leaves no option for us other than transforming our production and consumption pattern from take, make, use, throw to take, make, use and reuse. In order to meet the growing humanitarian needs in an equitable, resilient and sustainable manner. In one of his address, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji said, India is a mega diverse country and it is our duty
to protect this ecology. We had an eco-friendly culture, and now we need to rebuild it to improve our planet. Also, if I talk about science, it has the ability to find solutions and possibilities in times of crisis. So this mixture of cultural ethos, at one side cultural ethos and other side is scientific approach, will lead us to a friendly, sustainable environment, not only in India, but also to the world. Dear all, our government has taken many initiatives, particularly focused on sustainable development. Our government came up with this transformative education policy, which has a profound, far-reaching impact on the educational landscape on the country, thereby reshaping the destiny of this nation, both in terms of its internal resilience, resource and strength, and its standing in the world. The national education policy is based on a holistic approach. The purpose of holistic education is not only to prepare students for academic success, but also to enable them to learn the challenges of living as a whole. The holistic framework of NEP 2020 aims at laying the foundation of Shashakti, that is empowered, such that is clean, Shamagra means total, Shanatan, this is sustainable, and Shamriddhi is the prosperous Bharat. National education policy offers a broad perspective of learning that stretches beyond the academic achievements of an individual to consider the development of the whole person. Dear all, education significantly contributes towards sustainable livelihood and the economic development of the nation. So, through this policy, we are preparing our youth to have a multidimensional mindset and to contribute to various fields of research and development so that they can help in making the nation ready to meet and resolve a wide range of complex challenges. Dear all, moving forward, I would like to say that our government has already assigned special priority to implement a circular economy. Again, I am telling, a circular economy as the vehicle for the growth of the country. This holistic approach to circularity in the manufacturing sector could pave the way to a better and more inclusive future for all. Whether it is textbook or costly furniture, we are always keen to extend the value and life of all kinds of products that we use in our daily life. Today, on average, we reuse up to 60% of our discarded plastics, which is a huge number. However, the recycling has been traditionally implemented at the end of the value chain as the means of scarcity management at the individual, family or community level, and is not ripe enough to contribute much to the economic construct. Encouraging involvement of innovation, knowledge and skill are driving upcycling of waste to value-added products. In taking the opportunity of the circular economy forwarded, we need to consider the enormous volume of end-of-life products in electronic, capital goods, agriculture, healthcare, and other sectors. So many, how many we can recall? The electronic goods, washing machines, fans, different motors used in agriculture and other sectors, engines, and all are there as waste, but as definite means of social resources. Nowadays, people are coming forward
with innovative approaches to regenerative manufacturing. This is very important. These models are capable to deliver significant technological, economic, social, and environmental impacts in holistic economic growth. Amidst this transformation, the world finds the solution in the holistic model, which has always been nurtured in ancient philosophy and also the science. And I hope all the scientists present here physically and those who are in the offline all over the country and even in the abroad, you have to think in 3 days workshop, and you have to do something. At least we have to create some inspiration to the all scientists in what way we can go ahead. I would like to share one of my ideas, which I have shared yesterday. The Board of Governors meeting. Whenever we will think, whenever we will think about invention of any process, the goal of this process, we should keep it in our mind that in our ancient India, our birth land is told as mother. And even not only birthland, motherland, but also whole of the world, whole of the planet Earth, we called as Dharitri Ma. I am specially calling to the scientists who are in the abroad. I am telling some philosophers, some scientists, they think that saying mother as a living organ, Mother Dharitri as a living organ, this is only simple a philosophical aspect. I am telling you, this is not only a philosophical aspect. There is a science behind it that I am explaining. Whenever we think about the life, the born of a baby, how it comes. Only two gametes, either they go to the biological path or a zygote can be placed in the uterus. That is a part of the human body. A part of the human body which is a living body, and the uterus which is also a living organ. Whenever we put into that becomes a full baby after few months. Just to think about this. When a dormant life, there is a seed. Seed is put on a earth, put on my motherland. It gives a small plant. That means only one life can give birth to another life. Now we have come to know how zygote anchored to the uterine wall. But days are coming, how this seed anchors with the mother earth. That will be gradually so many theories have come forward. That is, and at the same time, yesterday when I am coming on road, I was looking towards the forest on the road. Then I got another idea. For the protection of our life, there is a skin, a barrier. If we go to the sun, if we go to the rain, but our internal organ protects this sun. But our mother earth, our motherland is very, very soft. She has not that kind of skin,
Everything is very loose. She is very soft. All the this brittle. This is a continuous. No, there is no breach of. No, there is no breach of continuity. It is a continuous. But my mother is very loose, very soft. She accepts all. If we put a foreign body into this living organ, what will happen? Just what it happens to in our body. If we put a foreign body, it does not take. It creates some formation of pus and everything. Our body waste. We may die. Similarly, we think in this way. And if our all research goes on that philosophy, then our research process, which I will keep, which we will recycle, on that basis, our thought process should be. The best way to protect and save the environment is to make people aware of the fact that what the environment provides us with and the impact on us that will be caused by environmental degradation. For example, we can actively participate in the campaign to save the earth. When all human beings learn the importance of the environment, we can cease being plastic bags and reusable plastic straws on a personal level. When we go shopping, we can use fabric and other reusable bags. Dear all, as our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has said, Sabka Saath, Sabka Bikash, Sabka Vishwas और Sabka Prayas. We need to involve everyone to educate about the remanufacturing capability building. To make this revolution happen, we need to accelerate the implementation of holistic means to regulate the incubation of new ideas and innovatives. These initiatives will require multiple endeavors and actions which will have to be taken by multiple bodies in a synchronized and standardized manner. I am hopeful that this workshop will carefully craft the confluence of Make in India, Atmanirbhar Bharat and NEP 2020 for catapulting our existing manufacturing capability to the frontier of technology, for bringing end-of-life resources back not only to our society, but for the sustainable use of the whole world, as we believe in the philosophy of prosperity of all. Our aspiration has been beautifully expressed in the following mantra. Sarve bhavantu sukhinah, sarve shantu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhaga bhavit. I am sure that this event, under the leadership of NIAMT Ranchi, will contribute to fulfilling the vision and aspiration of Atmanirbhar Bharat. Thank you all. Bharat Mata ki jai. एक बार फिर से मैं कहूंगी, बहुत बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार सर का। आपने उद्गाराभिव्यक्ति में बहुत सारी ऐसी बातें कही जो शायद हमने किसी किताब में नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ आपके माध्यम से ही आज हमें पता चला है। और यही अवसर होता है जब हम अपने गुरुजनों को सम्मुख सुन पाते हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय तक उनके प्रति हम अपने स्नेह, सम्मान, आदर, वंदन, अभिभूति को रूप प्रदान करें। और इस हेतु निवेदन करती हूँ ऑनरेबल चेयरमैन नियाम्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री श्याम एच अर्जुन वधकर सर को। सर, आप आज के अविस्मरणीय अवसर पर शॉल
और स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम सब की तरफ से आज के इस दिन को और भी खास बना दे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर सुभाष सरकार सर को शॉल ओढ़ाकर और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उन तक हम सब की तरफ से सम्मान आदर का भाव पहुंचा रहे हैं चेयरमैन सर। सर, ये झारखंड की मशहूर कलाकृति का नमूना है डोकरा आर्ट और ये वीर सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर को हम भेंट स्वरूप अपने अतिथिगणों तक पहुंचा रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूं डायरेक्टर नियाम्ट प्रोफेसर पीपी चट्टोपाध्याय सर को। सर, आप ऑनरेबल चेयरमैन नियाम्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स श्री श्याम एच अर्जुन बदकर सर को शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें और हम सब तालियों के माध्यम से उन तक अपनी भावनाओं को संप्रेषित करें। आमंत्रित करती हूं रजिस्ट्रार नियाम श्री उमेश चंद्र प्रसाद सर को कि आप ऑनरेबल फाउंडर एससीएल एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियाम श्री अजय चौधरी सर का सम्मान करें, उन्हें शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर। जोरदार तालियां हम सब की तरफ से। बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण। आमंत्रित करती हूं डीन पीएनडी श्री मनोज कुमार सर को कि आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश जी का सम्मान करें, उन्हें शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर। तालियों की सुमधुर ध्वनि मुझे तो नहीं लगता है कि रुकनी चाहिए। आमंत्रित करती हूं डीन एकेडमिक प्रोफेसर राजकुमार ओदार सर को कि सर आप हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक हटिया विधानसभा क्षेत्र श्री नवीन जायसवाल जी को शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह प्रदान कर। कहा जाता है कि संगीत में सबसे सुमधुर ध्वनि होती है तालियों की, तो तालियों की सुमधुर ध्वनि लगातार लगातार बजती ही रहनी चाहिए। और आमंत्रित करती हूं डीन रिसर्च प्रोफेसर नंदिता गुप्ता जी को कि आप आए मैम और मेयर रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची झारखंड का स्वागत करें, उन्हें शॉल उड़ाकर और उनको प्रतीक चिन्ह स्मृति चिन्ह आज के इस ऐतिहासिक अविस्मरणीय अवसर पर हम सब की तरफ से उन्हें प्रदान कर इन मधुर ताली की तरंगित ध्वनि के बीच और आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर डी राय सर को कि आप स्वागत करें चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड श्री पीएम प्रसाद सर का, उन्हें शॉल उड़ाकर ऑनरेबल चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड श्री पीएम प्रसाद का सम्मान और स्वागत।
और मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर पांडे सर को कि आप शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान करें प्रोफेसर रेस्पेक्टेड प्रोफेसर आईआईटी गुवाहाटी प्रोफेसर उदय शंकर दीक्षित सर का। बहुत जोरों की तालियां। हम सभी आह्लादित, मेजबान और मेहमान दोनों की भावनाएं आज के अवसर पर एक सी दिख रही हैं, एक सी हो रही हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि पता नहीं ये अवसर फिर कब उपलब्ध हो। बिना इंजीनियर की ये दुनिया बिना पहियों वाली गाड़ी की तरह है। जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के कारण हो रहा है। अभी हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि महोदया ने कहा कि जो भी होता है भगवान का दूसरा रूप हम इंजीनियर्स में देखते हैं। ये ना होते तो शायद आज क्या होता। तो आज के इस अवसर पर विधिवत और हम सभी जानते हैं कि विश्वेश्वरैया सर विश्वेश्वरैया ने ऐसी ऐसी चीजें की कि उनकी तरह का दूसरा कोई इस धरती पर नहीं आ पाया है। तो हम आशा और विश्वास करेंगे कि उनसे भी आगे बढ़कर यहाँ भारतवर्ष के नौजवान आगे बढ़कर आएं और उनके नाम को भी पार कर जाएं। ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये सत्य है। तो एक बार हम सभी जोरदार तालियां जिनके लिए आज का दिवस मना रहे हैं उनके लिए। जब हमारे गुरुजन महान शिक्षाविद हम सबके समक्ष हैं, कहते हैं कि गुरुजनों की पैर की धूली में मिल जाए तो आपका जो लक्ष्य होता है उसकी प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है। और आज तो हमारे आमुख सम्मुख हमारे गुरुजन। और मैं आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर एम सिंह सर को कि आप मंच पर पधारें। सर हमारे गुरुवर श्री एम सिंह सर हम सबके बीच में, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और डायरेक्टर सर से अनुरोध होगा मंच पर आने का। डायरेक्टर नियामत श्री पीपी चट्टोपाध्याय सर। In fact, I take this opportunity beyond the formality to express feeling of our institute. See, I mean, whenever we move forward, whenever we aim for something, we find people in front of us, but we move forward with certain driving force. There are certain generators behind us, what do you call engine, which takes us forward. And we have officers in our ministry, our secretary, honorable secretary, our joint secretary, our director, our under secretary, who always helps us. And it is the occasion where I thought I should take this opportunity to pay our respect and gratitude to them. So Mr. M.M. Singh is here. We'll take 1 minute. We have just, the memento is adjacent room. So I will ask you to wait for 1 minute. I understand it is beyond the schedule, but this is our responsibility. I will feel very happy with that. Sir, please wait a minute. Yeah. आज सर का सम्मान कर रहे हैं
डायरेक्टर नियाम्ट प्रोफेसर पीपी चट्टोपाध्याय सर, हमारे गुरुवर, हमारे आचार्य प्रवर मंच पर हम सबके बीच, और उन तक शॉल और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम सब अपना अनुराग, अपना आदर प्रेम स्नेह पहुंचा रहे हैं। बहुत जोरों की तालियां। This is a token of appreciation to our ministry on behalf of National Institute of Advanced Manufacturing Technology. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आज का ये अवसर इतना महान है, इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो गुरुजन हम सबके बीच में पधारे हुए हैं, उनके लिए कितना भी उनका आभार हम सब करें, कितना भी धन्यवाद करें, शब्द हमारे कम पड़ेंगे। लेकिन कुछ रीति होती है, कुछ रिवाज होते हैं, उसके तहत मैं विधिवत धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर श्री A.K. सूद सर, नियाम्ट रांची को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सर। धन्यवाद मैडम। अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं सर्वप्रथम सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप लोगों के सामने अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करूं। सर्वप्रथम मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर शुभाकर सरकार सर का, कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की गरिमा प्रदान करें। हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे माननीय सदस्य राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश जी को, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हमारा उत्साह बढ़ाया। किसी कारणवश हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी आ नहीं पाए हैं, मगर हमें मालूम है उनका सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है, इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं हमारी मेयर श्री आशा लकड़ा जी को, जो कि एक तरफ से हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। वो हर वक्त हमारे साथ खड़ी रहती हैं और हमारे हर कार्यक्रम में हमारी उत्साहवर्धन करती हैं। धन्यवाद मैडम। हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे विधायक श्री नवीन जायसवाल जी का, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर हटिया क्षेत्र में बहुत सुखपूर्वक और आनंद के साथ अपना कर्तव्य निर्वाह कर पा रहे हैं। धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे चेयरमैन श्री श्याम अर्जुन वादकर सर का, जिनकी गाइडेंस में हमारा ये इंस्टीट्यूट एक नए कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम अपना स्वरूप एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद सर। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अजय चौधरी जी का, जिन्होंने असल में हमें मोटिवेट किया था एक नए दिशा में जाने की, इंडस्ट्री 4.0 डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से। धन्यवाद सर। हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री PM प्रसाद सर का, जो आज शायद पहली बार हमारे प्रांगण में आए हैं और उन्होंने हमें मोटिवेट किया है। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के साथ बहुत कार्य करते हैं, और ये जो फ्यूचरिस्टिक एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फोरम ऑफ इंडिया है, इसमें इंडस्ट्री के लोगों का भी सहभाग है, और हम चाहेंगे कि CCL भी हमारे साथ जुड़े इसमें। धन्यवाद सर। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर US दीक्षित सर का। ये प्रोफेसर IIT गुवाहाटी तो है ही हैं, साथ में हमारी जो FAMAI जो सोसाइटी है, इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने ही हमें गाइड किया है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। धन्यवाद सर। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रेस और मीडिया के लोगों का, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर और हमारे को एक प्रमुख जगह दी है अपने न्यूज़ में। उन सबको धन्यवाद। और अंत में हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे निदेशक महोदय डायरेक्टर सर श्री PP चट्टोपाध्याय सर का, इस कार्यक्रम में जुड़े हर व्यक्ति का, हर फैकल्टी स्टाफ, इतने सारे स्टूडेंट्स और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें हमेशा आशीर्वाद, हमारा सहयोग दिया है, उन सबको हमारी तरफ से नमन। धन्यवाद। धन्यवाद।
आखिर में मैं आप सभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोलना चाहूँगी कि आप सभी जाएंगे रूम नंबर 3 में, 103 में अभी। और सबसे आखिर में मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। अपनी मातृभूमि को नमन करें राष्ट्रगान के साथ। आप सभी से अनुरोध करती हूँ अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।